Hello everyone and welcome to the channel. So in this video we're going to talk about some of the recent updates from the UK government. So these changes are going to be effective from 2nd of January से ये effective हो जाएंगी. So it's going to affect anybody who's coming here for the January intake and the future intake. So this video is going to be very relevant. So do share with your friends and family members because they should be aware about this if you're coming here and if any of your friend is coming here. तो जो चेंजेस इसमें हुआ है इज गोइंग टू बी ऑन वन फ्रंट विच इज विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. तो जैसे जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो देन यू नीड टू शो टू द वीजा ऑफिसर कि आपके पास सफिशिएंट फंडिंग पड़ी है आपके बैंक अकाउंट में इन ऑर्डर टू सस्टेन जब आप यहाँ पे यूके में आओगे, राइट. तो उसमें क्या क्या दिखाना पड़ता है? सबसे पहले चीज आपको अपनी ट्यूशन फी दिखानी पड़ती है. सेकंड आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं. तो अभी जो चेंज हुआ है वो सेकंड फ्रंट पे हुआ है जो है आपकी लिविंग एक्सपेंसेस, क्योंकि जो ट्यूशन फी तो बढ़ती रहती है एनीवेज यूनिवर्सिटी की, तो वो तो हमेशा अपडेट होती रहती है. पर जो लिविंग एक्सपेंसेस थे यूके की गवर्नमेंट ने वो एक्चुअली अपडेट ही नहीं किए थे 2020 से. तो अभी 2020 से अभी 2024 आ गया. सो फ्रॉम द 4 years दे हैवंट अपडेटेड इट. सो दैट्स व्हाई अभी इन्होंने वो एडजस्टमेंट करी है जिसके कारण जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई हो जाएंगी विद रिगार्ड्स टू योर लिविंग एक्सपेंसेस. तभी वो रिक्वायरमेंट है क्या? सो व्हाट दे हैव डन इज नाउ ऑब्वियसली जब आप यूके वीजा के लिए अप्लाई करते हो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को वो आपको दो तरीके में बांध देते हैं. इफ यू कमिंग टू लंदन उसकी अलग रिक्वायरमेंट है. इफ यू कमिंग टू आउटसाइड ऑफ लंदन कहीं भी जा रहे हो आप स्टडी करने के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, तो रिक्वायरमेंट उसकी डिफरेंट है. सो इफ यू आर स्टडिंग इन लंदन द रिक्वायरमेंट इज नाउ यू नीड टू शो एन एविडेंस ऑफ हैविंग 1483 पाउंड्स पर मंथ और पहले था 1334 pounds. So basically it's a 11.2% increase from the previous figure which we had. Then the second thing is if your university is outside of London, then you need to prove that you have 1136 pounds per month और पहले ये फिगर थी 1200 pounds. So it's again an increase of about 11% फिर से. So basically from 2020 से लेके जब ये रिक्वायरमेंट आई है उसमें इन्होंने 11% का इंक्रीज कर दिया है, right? So now again, is it a big thing? For me personally, I think because the inflation is increasing in the UK. Anyways, this figure should have been updated even earlier on. So I don't think so. It's like a big change. But then obviously I acknowledge from the students who are coming here because a lot of you are coming from a background where you have like limited cash fund and you need to show such a big amount. So it's again going to cause a little bit of a stress and panic. From the situation you're coming from, तो उनके लिए आप the most concern for them, but then you can't do anything about it, right? So because the inflation goes up in the UK, so basically cost of living is essentially कि UK में जब आप यहाँ पे आओगे do you have sufficient funds to sustain yourself, ये आपने उसमें दिखाना है, right? So in a way it's a good thing that you should be having that amount of money so that you don't sort of struggle or make shortcuts in the UK, right? So you can sustain yourself. That's what you're trying to demonstrate at the end of the day. So this has been the one big change, which is your financial requirement for the living expenses will be going up. Then again for the tuition fee, anyways, from year on year basis it goes up. And one thing which I will recommend to any of the students who are coming here, there are scholarships available from the university. And a lot of students don't do research on the scholarships which are provided by their university, right? So when you're applying, चाहे आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो किसी के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिकॉज यू कैन ऑलवेज सेव अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बाय अप्लाइंग टू द स्कॉलरशिप. जैसे जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्वेथक्लाइड में पढ़ने गया था, आई सॉ माई सेल्फ की वहाँ पे स्कॉलरशिप पड़ी थी यूनिवर्सिटी के लिए. देन आई went ahead and apply and I got around about 2,000 to 3,000 pounds of reduction every single year and I came for my undergraduate. So if you multiply it by 5 साल का कोर्स था वो, it's basically around 10,000 से 15,000 का फायदा, because you don't have to pay that extra money because you've got the scholarship. तो प्लीज जब भी आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या तो आपका ही हार्ड अर्न मनी है, आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है, सो ट्राई टू सेव इट एज मच एज पॉसिबल. सो डू चेक आउट फॉर स्कॉलरशिप्स इफ यू कैन अप्लाई देम. Now the another question which students will be having is जो ये figures है 1483 pounds per month, जैसे लंदन की हमने फिगर की बात करी थी, हाउ मच मंथ का आपके पास वो डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, राइट? एंड फॉर क्या वो 1 साल का होना चाहिए, क्या वो 6 months का होना चाहिए, 3 months का होना चाहिए, कितने मंथ का होना चाहिए? सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज इट हैज टू बी फॉर 9 months. सो इट्स लाइक बेसिकली 1483 pounds multiplied by 9 is the figure you should be having in your bank account. I'll mention somewhere the total amount over here, but that's the figure you should be having. So you need to multiply it by 9 and वो आपकी
28 days ओल्ड होना चाहिए आपके बैंक में वो जो मनी है. नाउ द अदर थिंग इज, आर देयर एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रूफ ऑफ फंड्स. नाउ जैसे भी मान लो आपने स्टूडेंट कंपटीशन यहाँ पे बुक करी, राइट, उसका आपने डिपॉजिट पहले से भर दिया. नाउ डू यू स्टिल नीड टू शो दैट टोटल अमाउंट जो हमने थ्योरी में पहले बात करी थी, और यू कैन एक्चुअली रिड्यूस क्योंकि आपने डिपॉजिट में ऑलरेडी पैसे डाल चुके हो, और जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल गई, राइट, आपकी नेट अमाउंट कम हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन रहता है काफी स्टूडेंट्स का. द आंसर टू दैट इज येस, राइट. इफ यू आर पेइंग योर डिपॉजिट टू द यूनिवर्सिटी, डिपॉजिट टू द कंपटीशन, कोई भी पैसा अगर आपने पहले से भर दिया है जो भी डिपॉजिट के अनुसार होता है, then it will get reduced from the final amount. And since we're talking about accommodations, if you're a student who are coming in a January intake, I want to recommend you a resource which is called Ember Students, because this is a marketplace of all the student accommodations in the UK, and they've got really student friendly, cost friendly accommodations available. जैसे आप ग्लासगो या लंदन में आ रहे हो, they will be listing all the accommodations on their website, so that you don't have to go to every single website. आपको पता भी नहीं होगा कौन सी accommodation है, right? So on their platform you can compare कौन सी सबसे सस्ती है, कौन सी सबसे महंगी है, कौन सी मीडियम प्राइस है, किसके क्या बेनिफिट्स है. You can have a look. आप कमरे की पिक्चर्स देख सकते हो. So make sure you go on Ember Students website and have a look at it. जो लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे then you'll be getting a lot of cashback offer as well. So make sure you use the link which is in description and book your accommodation through Ember Student, and don't leave it at the last moment, बिकॉज उसकी फिर से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई जाएगा, क्योंकि एट द एंड मोमेंट सस्ती वाली अकोमोडेशन पहले से बुक हो जाती है, सिर्फ महंगी वाली रहती है. देन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर अफोर्डेबिलिटी हियर इन द यूके. नाउ द सेकंड थिंग इज, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, इफ दे हैव टू अप्लाई लेट्स से फॉर अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, उनको कुछ उनके लिए कोई चेंज है कि नहीं है. वैसे भी उनको कुछ ऐसे मनी शो नहीं करनी पड़ती, और अभी भी वही रूल इनका सेम है कि यू डू नॉट नीड टू शो एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ मेंटेनेंस फंड्स. If you're applying for a post-study work visa after your university, you can straightforwardly go and apply for PSW. So, well, at the end of this video, let's talk about what will be the implication on the student recruitment. So, obviously, जैसे कि if the threshold is increasing, as we are talking about inflation, if you keep in कि last 4 years में update नहीं हुआ, then it's like quite a fair sort of adjustment to be made. But then as I was talking earlier on, जैसे जो students जो struggle करते हैं थोड़ा सा tuition fee pay करने में, they from that upper middle class, slightly upper middle class sort of family, they might struggle because they need to show more money in their bank account, which is 28 days old. So again, this might not like drastically impact the international students intake, but again, for some of those conscious consumers with regards to their budgets, they might be a little bit restricted, and there might be like a slight change, but as I'm saying, it won't be like a drastic change in the sort of immigration numbers of the students who are coming to the UK, because it's a very much like a year-on-year change, which should have happened earlier on, but it's happening after 4 years. So it shouldn't be something any drastic with regards to things which we should be seeing on the student recruitment, right? So with this, I hope you best of luck when you do your application. If you need my any help, I do one-to-one calls. Link उसका description में पड़ा है. I offer the cheapest price in the category. So make sure to book my one-to-one call, and I'll be happy to help you out in a personalized manner. Thank you.